यो ब्रदर, आवाज आ रही है? रहा हूँ मैं। चलो चलो चलो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यही ना अपना, क्या बोलते हैं? 32 33 था ना। 233 ना। पेयर इंटरनेशनल। पेयर बराबर। इंटरनेशनल, पेयर पेयर। पेयर बराबर। इंटरनेशनल। मैं पढ़ना चालू करूँ? पेज नंबर क्या है? पेज पेज नंबर क्या है? नंबर पेज नंबर। 130 130। हाँ, मिल गया मिल गया। लिया, मिल गया सही है मिल सही है गया। सही है। तू चाहिए तो ना अच्छा। अपने लैपटॉप पे एग्जाम के डाउनलोड करके ना वो कर सकता है, लाइक शेयर, मतलब आंसर्स तू वहां पे खोल सकता है। मेरे को बहुत अभी कन्वीनियंट पड़ रहा है, मैं वैसा कर रहा हूँ तो देख ले। अच्छा, ऐसा है क्या? देख ले, मतलब तू बाद में इसे तो ट्राई कर, अभी के लिए क्योंकि है ना वो पूरा का पूरा चलेगा कंटेंट चलेगा। अपने को शिफ्ट करना पड़ता है ना। चलेगा चलेगा चलेगा, कोई नहीं। वो मैं करता हूँ फिर। It is July 15. You are अच्छा। an audit supervisor in Apple Co. and you are currently reviewing the documentation of Peer International Co.'s internal controls in preparation of interim audit. Peer International Co. is a manufacturer of electrical equipment. It has factories across the country and its customer base includes retailers as well as individual customers to whom direct sales are made through its website. The company's year end is 30th September 2015. Pear's website allows individual customers to order directly and full payment is taken in advance. The website has some inbuilt validation checks to ensure details such as customer postcard and payment. एक मिनट पहले तो ढूंढना क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड डेफिशिएंसी दोनों ढूंढने हैं। हम्म। The website has some inbuilt validation checks to ensure details is such as the customer passport and post code and payment card details are in correct format. Currently, the website is not integrated to the inventory system and the inventory levels are not checked at the time orders are placed. सही है? मिल गई। शायद ऊपर ऊपर वाला कंट्रोल था, मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, तो फिलहाल के लिए वेट करते हैं। Peer retail customers undergo credit checks prior to being accepted and the credit limits are set accordingly by sales manager. These customers place in orders through one of the teams. Okay, एक मिनट ना, सेल्स मैनेजर सेट कर रहा है तो शायद ये एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, चेक करना कि ये पक्का सेल्स मैनेजर ही कर रहा है या नहीं। आगे, the customers place their orders through one of the sales team who decides the sales discount levels. ये तो पक्का deficiency ही है। Sales team should not be given to describe the authority of sales discount. Sales invoices are raised by accounts department using GDNs. Monthly customer statements are sent to retail customers by the credit control team, and the credit control team follow up on overdue debts as soon as they become overdue. ये डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। शायद, अच्छा मेरे को ये शायद ये लग रहा है, क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बट देखते हैं। लास्ट लाइन पढ़ना उसकी। फॉलो अच्छा, अप ऑन मतलब ओवरड्यू प्रायर टू डेब्ट्स बीइंग एज ओवरड्यू, सून एज। हाँ प्रायर टू बीइंग ओवरड्यू होना चाहिए। ओवरड्यू होने के बाद इन लोग को फॉलो अप मांग रहा है। हाँ वो गलत है, राइट यार, गुड यार। Goods are dispatched via local couriers. However, they do not always record customer signatures as proof of customers have been received in the goods. So local couriers. डेफिशिएंसी। ये अपन ने कल एग्जाम में किया था क्या, पियर को? नहीं तो। मेरे को थोड़ा लग रहा है एग्जाम जैसा ही। शायद। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ फटाक से। तेरे पास भी ये रहेगा, लैपटॉप में रहेगा ना? हाँ हाँ है ना, मैं वही देख रहा हूँ 2 मिनट। हाँ है, बट वैसा ही है, मतलब काफी सिमिलर है, सम ऐसा हो रहा है। ठीक है। Over the past 12 months, there have been customer complaints about delay between sales order and receipt of goods. Has investigated this and found that each case the sales order has been entered in the sales system correctly but was not forwarded to the
dispatch department for processing. तो ये 3 deficiency हो गई. ये तो पूरा डिटो था. बराबर. Raw materials used in manufacturing process are purchased from a number of suppliers. Factory supervisor checks store stock levels on a weekly basis and place purchase requisition with the centralized procurement department. मुझे ये test of control लग रहा है. The requisitions must be authorized by the factory managers before the order is processed by the procurement department. Orders can only be placed with suppliers from the approved supplier list. ये भी एक test of control जैसा लग रहा है मेरे को. The list is updated by procurement team and the new supplier can only be added once the terms of the contract have been agreed and reference obtained. As a result, the staff changes the payable ledger department, such as supply statement reconciliations are no longer performed. Supply statement reconciliation should be performed on a monthly basis and a review should be conducted. Additional changes to the supply data details in the purchase ledger master file are undertaken by payables ledger clerks. Second deficiency bhi mil gayi. In the 6 months, Pear has changed part of its manufacturing process. A significant level of new equipment has been purchased, resulting in considerable levels of plant and equipment being surplus to requirement and disposed during the year. Purchase requisitions for all new equipment have been authorized by the production supervisors. तो यहाँ तक तो proper deficiency है कि surplus हो रहा है. एक टेस्ट हो गया. एक काम करेगा, पहले थोड़ा बिना देखे बोलने का ट्राई करते हैं ये सारे पॉइंट्स जो अपन ने किए. हाँ बस बस एक मिनट रुक जाओ. एक्चुअली अगर तू देखेगा ना तो ये गुड डिस्पैच वाला रॉ मटेरियल वाला और ये लास्ट वाले पैराग्राफ है मैन्युफैक्चरिंग वो सेम. अरे पूरा खाली उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा ही बहुत वो चेंजेस सेम है. किया. अरे पूरा क्वेश्चन हाँ ही क्वेश्चन सेम सेम है है. खाली थोड़ा बस ही उन्होंने 19 किया. एक दो खाली चीजें उन्होंने थोड़ी पहला ऐड करके पैराग्राफ. बताई हैं. और उन्होंने ना इस सम में खाली अलग अलग दिया. कल अपने तीनों साथ में किए थे. अभी इन्होंने अलग अलग किया है. कंट्रोल डेफिशिएंसी के दो अलग, टेस्ट के दो अलग. तो वो ज्यादा लिखना पड़ेगा उसके लिए. चला जाए डेफिशिएंसी के हिसाब से क्या रहेगा कंटिन्यूस. पहले तो करंटली सबसे वाला ये इन्वेंटरी सिस्टम सिस्टम में डाला नहीं तो उसका भी बराबर चेक करना है बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और उसका सिग्नेचर होना चाहिए. एक तू बोल दे, एक मैं बोलता हूँ. सही है, ऑल्टरनेट जाते हैं. तो ठीक है. तो फर्स्ट इन्वेंटरी level are not checked and not integrated into the inventory system. To check that appropriate inventory upgradation to the system has been done or not. It should be done by the responsible official and a review should be done and check the evidence. बस upgradation और check. फिर आगे बढ़ता हूँ. मैं नेक्स्ट लेता हूँ. द कस्टमर प्लेस देयर ऑर्डर्स थ्रू वन ऑफ द सेल्स टीम who decides on the sales discounts. The sales team should not be given the authority to decide the sales discount, as if they give high sales discounts, this may create loss of revenue for the entity. इसका recommendation तो वही है कि sales team should be removed from the responsibility of giving sales discount level of deciding on the sales discount levels, and this responsibility should be given to a responsible official. The responsible official should verify this by way of signature. Evidence this by way of signature. Next deficiency तो बोल. होगा हाँ वो मंथली वो कॉपी पेस्ट होगा. फिर ये होगा कि मंथली ओवरड्यू. The follow-up is only taken when the debt has been overused, that there is an overvaluation of receivables and understated of the profit and loss expense. तो इसका recommendation क्या होगा? मेरे को है तो ना credit control should बोल.
Now, the credit control should take a overview, review, and a follow up on a early basis, and and a reminder should be given on appropriate date. And the work of the credit control should be reviewed by the director or the senior member. Right. यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अपन Hmm. को खाली 5 ही डेफिशिएंसीज ढूंढने हैं। अपन Hmm. ने 4, 5, 6, 7 अपन ने ऑलमोस्ट 7 या 8 तक ढूंढ लिए हैं। तो मेरे को ना ये वाले में थोड़ा डाउट आ रहा है, बट मे बी शायद सही भी हो, क्योंकि ना ओवरड्यू तू पहले से चेक करेगा ना, ओवरड्यू होने के बाद तू क्यों चेस करेगा। वो तेरा पॉइंट तो सही तो है। वही तो बोल रहे हैं कि ओवरड्यू होने के बाद। हाँ सर, जैसे वो अपना एक था ना प्रीवियस सम में 30 डेज का था, उन्होंने 90 डेज के बाद रिमाइंडर भेजा। मेरा मन नहीं मान। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट रुक जा। तेरे घर में फॉल, ये तेरा ही है ना घर? हम्म। उस पे फॉल सीलिंग है? ओ, हाँ तू रे। अमीर है। मैं तू अमीर है। तू भी अमीर है। तू बस बताता नहीं है। 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं। आराम तू 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 खोर। अगर तू अगर पूरा रिव्यू देखेगा ना तो भाग जाएगा। बोलेगा भाई रहने दे, नहीं आना। इस उसका धारा भी सही है। बट ठीक है, ये हमेशा अपने को बहुत गरीब दिखाता है, मारवाड़ी। Okay, goods are dispatched by via local couriers and signatures are not taken when they are received. Signatures should be taken when they are received. इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी होता है कि सैंपल्स चेक करो कि सिग्नेचर ले रहे नहीं ले रहे, बट वो बोलना नहीं है। कस्टमर्स हैव रिसीव्ड द गुड्स, और क्या बोल सकते हैं। उतना ही है कि सिग्नेचर लो। इसका मैं बोलूँ क्या? बोल इसका मैं बोल। बोलूँ क्या? It should be reviewed that the invoice which is be containing the should be contain the signature of the customer, and if there is no signature, the payment to the courier partner should not be given. The क्या local बोलता है? courier should, a policy should be made that the local couriers Hmm. that the local courier should take signature of the customers that they have received the goods as a proof, और अगर सिग्नेचर नहीं देगा तो giving पेमेंट नहीं मिलेगा evidence। सीरीज का। हाँ हाँ बराबर। बड़े पेमेंट का मेरे को पता नहीं। और तूने इनवॉइस क्यों बोला? नहीं नहीं, है। इनवॉइस मत बोल। कुरियर्स बोला, कुरियर्स ही रहने दे। ठीक है। फालतू में ना वो लोग फिर अपना आगे क्या? मार्क्स काट देंगे। नेक्स्ट तू बोल। Over the past 12 months, there is a customer complaint or review that लोग उसका शायद से ऐसा कर सकते हैं। क्या देना, क्या अपन को टेस्ट ऑफ कंट्रोल देना कि रिकमेंडेशन देना? रिकमेंडेशन, रिकमेंड रिकमेंडेशन। check the website for any updation or any either the approx inventory in the stock should be shown, and if there is the stock is then out of the if the inventory is out of the stock, then there should be maintained approx waiting time for the customer to order the goods. क्योंकि ये पहला चीज रहेगा। सेकंड चीज रहेगा, if there is not appropriate inventory, if there is not appropriate stock in the inventory, then the order should be processed. The department head should be reviewed that it should be reviewed on a frequently basis for the inventory valuation. So, not inventory check. थोड़ा फ्रेमिंग में था बस। सही है, मैं तो यही बोल देता कि बट इट हैज टू बी फॉरवर्ड टू द डिस्पैच डिपार्टमेंट। मैं सिंपल रखता, बट तेरा बेटर लगा मेरे को। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन नो लॉन्गर परफॉर्म। बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ मंथली बेसिस so as to identify if there are any deviations, and then those can be corrected at an earlier stage itself. And पेपर कौन? they should be conducted by a responsible official and evidence by way of signature. अरे ये लिखना इसका तो मजबूत पॉइंट है। इसकी जगह ये लिख द रिकंसिलिएशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट शुड बी डन बाय द फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर, मैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियली बोल देता हूँ। हम हमेशा मैं वो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ना किसी नहीं, चीज मेरे का को याद है। investigation कोई और करता है फालतू में। नहीं, अपना बैंक के टाइम में फाइनेंस डायरेक्टर ही करते बट बैंक नहीं है ना, ये तो पेबल्स लेजर
डिपार्टमेंट है, तो मैं तो एक्चुअली इसका सुपरवाइजर बोलने वाला था या फिर परचेज डिपार्टमेंट का हेड बोलने वाला था, बिकॉज नहीं तो पेबल्स ठीक लेजर है, तो डिपार्टमेंट ठीक। उनके पास जाता है। बट ठीक है, तू नेक्स्ट बोल। तो मैं एक बार ना वो आंसर खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो अपन डेफिशिएंसीज देख पाए। नहीं, और क्या, लास्ट यही था। ए भाई, ये क्या हो गया? नहीं, लास्ट ये नहीं था, तेरा ये हो गया ना। नहीं, हम्म। additional changes in the supplier details in the master ledger data file can be undertaken आ, by payables ledger clerk. They should not be undertaking अरे, it should be done by the responsible senior member or the supervisor, supervisor. and the authorization should be given, and the evidence should be in the form of the signature. ठीक है, बराबर है, सही है। और नीचे एक लास्ट है, a significant level of new equipment has been purchased, resulting in हम्म। considerable level of plant and equipment becoming surplus to requirement and disposed during the year. Discuss with the management which of the inventory should be written down and at what value, and if not written down, then then how are they intending to sell this inventory, the excess of inventory. गलत बोला, but I don't know. एडजस्ट कर ले एक जगह पे मेरे भाई। हम्म, ठीक। वॉल पे भी नया हाँ कलर जब, लगा है, ऐसा ही लग रहा है। ये तो है। नहीं रे पागल, ये मेरा पड़ोसी का घर है। वो क्या है, कैश की गड्डी है वहां पे, लग रहा है मेरे को। अरे अरे अरे, इतना अरे हाँ, कैश है कि ड्रग डील ऊपर करता है। रखना, उतना ऊपर रखना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ड्रग डील करता है, ड्रग डील। मैं देख अच्छा कहाँ चल, ये बताना संभाल। था। चल नहीं चल नहीं नहीं, चल। ये अपने अपने पास ही रखेगा। अच्छा। निवासी रखना, हाँ। अरे अब गन क्यों निकाल रहे हो? सीधा आदमी है। अरे 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 अरे, यहाँ भरोसे क्यों आ वाला रहे है। हो? अरे चल, आगे बढ़ते। अरे अंकल, काली वेबसाइट वाली की कैब क्यों बुक कर रहे हो? अरे, वेबसाइट एंड इन्वेंटरी सिस्टम नॉट इंटीग्रेटेड, ये अपन ने बोला। वेबसाइट शुड बी अपडेटेड एंड पेज इंक्लूड नंबर बता। इंटरफेस। 436। ठीक है। 436, 436। लैपटॉप पे तो बिना डेटा के भी खोल सकता है, जस्ट बता रहा हूँ। नहीं रे, मैं क्योंकि तू गरीब हूँ। मारवाड़, हाँ। वो लगा ही, वो लगा ही था। चला जा। अब जी में है, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। ऊपर पंखा है, उधर ही फॉल सीलिंग। अरे 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 अरे, वॉल पे नया रंग, अरे फैन के लिए स्विच है वहां पे। अरे सही है, ऐसी गरीबी है। हमें साहिल, पढ़ाई मेरे करना है। पास छत पंखे नहीं में है। साहिल, मेरे पास छत नहीं है घर में। अरे दो तो छत है तेरे पास, फॉल सीलिंग लगा के बैठा है, छत नहीं है बोल रहा है, शर्म भी नहीं आती। अच्छा अंकल, तोड़ने वाले हो क्या? अच्छा अच्छा। तोड़ दो तोड़ दो। नहीं नहीं, आपका पैसा, अंकल, आपका पैसा है, अंकल आपका किसको पैसा। बोल रहा है? बाप है वो तेरा, अंकल बोल रहा है। अबे यार पागल, इतना तो वे, क्लोज रिलेशन नहीं बनाता मैं। हाँ सही है। ये अपन ने बोला था ना, वेबसाइट इज नॉट इंटीग्रेटेड, an website should be updated and include an interface with the inventory system. हाँ, ये मैंने This बोला था। check, हाँ, this should check the inventory levels and only process the orders if adequate inventory is held. If inventory is out of stock, then this should appear on the website with approximate time waiting time. नहीं तूने का गलत सही पॉइंट था पे मेरा बोला भाई। था, बट सही था। अबे, मैंने इसके लिए बोला था। नहीं, तूने नीचे वाले के लिए बोला था। ये मतलब, फॉरवर्डेड टू डिस्पैच सिस्टम में गलती से बोल दिया तूने, बट इसके लिए आएगा। बट जो भी तूने बोला ना, वो सब सही था। हाँ खाली ऐसा है वो क्या? वेबसाइट में बोल देना, क्योंकि अच्छा था, मैं भी नहीं हम्म, बोल पाता। The orders are placed, the orders can directly be reached in the inventory system, and सही if सही। the goods are out of stock, then it should be properly displayed on the website with the approximate waiting time. ठीक है, कस्टमर से हम्म, सिग्नेचर्स नॉट ऑब्टेन्ड, एक मिनट रुक जा। हाँ ये तो ये वाला होगा। एक इन्होंने डायरेक्ट अच्छा कस्टमर इसमें, सिग्नेचर्स नॉट ऑब्टेन पे ये लोग पहुंच गए, मतलब अपन के जो दोनों बीच के पॉइंट्स थे वो दोनों गलत है क्या? बाद बाद में देखते हैं, आजा।
From goods dispatched by local couriers, customer signature not obtained. This will falsify the claim and delivered wrong twice. This could cause a loss for the company. बराबर है. उसके बाद Pear should remind all local couriers the customer signatures must be obtained as per delivery and payment will not be made for dispatches with missing signatures. Damn, bro. भाई तूने बस एक बार पढ़ा. तूने भाई मेरे को लगता है तू इसको रट्टा मारता है भाई. तू पढ़ता है भाई. मैं तो भूल जाता है. तू पढ़ता है. मैं बस एक ही बार पढ़ता हूँ भाई, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास। तू पढ़ता है सले. तू अरे हाँ अंकल, कचरा साफ कर लो। अंकल क्यों आज बोल का रहा कितना है? हुआ? बाप है वो छोड़. अच्छा Pear आपका 20 रुपये, अरे कम लगाओ यार, कम लगाओ। लगा. कितना, 1 घंटा तो रहता हूँ आपके पास। ठीक है। Pear should remind all local couriers the customer signature must be obtained as proof of delivery and payment will not be made for the any of the missing signatures. Unfulfilled sales order. There have been number of situations where sales order have not been fulfilled. This can lead to loss of customer goodwill. Once the goods are dispatched, they should be matched with the sales order flagged as fulfilled. The system should automatically flag any outstanding sales order past the predetermined period, such as 5 days. This report should be reviewed by a responsible officer. If the customer says the orders are fulfilled, they should be flagged as fulfilled, unfulfilled, and the unfulfilled order should be reviewed by a responsible official. Any orders that are not been fulfilled should be flagged. Have been fulfilled should be flagged as fulfilled, and if orders are not been fulfilled should be flagged as unfulfilled. Flagged as unfulfilled. should be more। As तो unfulfilled. ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं. Sales discount set by sales team. मेरा वाला पॉइंट आ गया. All members of the sales team should be given the authority to grant sales discount up to a set limit. However, the sales discount above that set limit should be authorized by a sales area Authorized। manager or the sales director. Regular review of sales discount level should be undertaken by a sales director and this review should be evidenced. ठीक है। So the फिर sales team सप्लाई। responsible officials. वो तो बराबर है. फिर आगे बढ़े। Official बराबर. Changes in the master data file. Changes to the master data. Changes to the supplier ये details in the. रिकंसिडरेशन में पड़ेगा। पढ़ा मैंने. अच्छा चल ठीक है. मैंने ऊपर से मैंने वो हटाया रहेगा. ठीक है पर फिर खाली राइट साइड का पड़ा है, राइट साइड का पड़ा है। supplier statement reconciliation should be performed on a monthly basis for all suppliers and these should be reviewed by a responsible official. ठीक है, ठीक पढ़ा था भाई. जाके देख है। लेना आगे YouTube पे. क्या क्या? जाके देख लेना YouTube पे. Changes to the master data file. Changes to the supplier details in the payables ledger master file can be undertaken by the payables ledger clerk. Key supplier data might accidentally be amended. Festive suppliers may be set. This increases the risk of fraud and loss for the company. Only राइट payable साइड का पड़ा है, ledger. राइट इसका। Only payable ledger supervisor should be have the authority to make changes in the master data file. This should be controlled via passwords. Regular review of changes in master data file by responsible official and this review should be evidenced. ठीक है। Authorization of लास्ट purchase पेज पढ़ना है। requisition. Authorization of purchase requisition. Okay, ये मैंने पढ़ा नहीं था. Capital expenditure authorization levels to be established. Production supervisors should be able to authorize low value items and high value items should be authorized by the board.
Capital Expenditure authorizes legal office to establish production insurance should only be able to authorize low level items and high levels to authorize the board. Okay. हाँ नमस्ते आंटी। नहीं यार घर पे कुछ बनाने तो लेके नहीं आ रहा हूँ। नहीं कोई नहीं 3 दिन पुराना रोटी खाएंगे। अरे अंकल आपका 2 लाख गिर गया है। ये ले लो। अच्छा तो मैंने छू लिया तो आप जला दोगे पैसे। चल चल आगे बढ़े। यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन कहाँ आता है? मैं तेरे को सेंड करता हूँ। तो चलना डायरेक्ट कंट्रोल करता हूँ। हाँ आया, 1 मिनट रुक जा। हाँ कॉपी। एक मिनट। doesn't थर्ड even कॉपी make इन द sense. It सेंस doesn't even make sense. एडिडास का ऑबिबास वैसा। तू मारवाड़ियों का मारवाड़ी है भाई। सिस्टम। चल मैं भी मारवाड़ी हूँ वैसे गाइस। बोलने दे, बोलने दे, वरना कोई ऑफेंड हो जाएगा फिर चैनल को रिपोर्ट कर देंगे। मैं भी मारवाड़ी हूँ, मैं भी। Validation says the website has controls to check the validity data entered by the customers. एक मिनट हाँ। एक मिनट। क्या लड़की है? कल शादी का ऑफर आ रही है। हाँ, सही है सही है। मैं तो तैयार, मैं हाँ बोल दूंगा बिना देखे बिना सोचे। 12 साल। चलेगा कोई मतलब वो पक्का राजस्थान से। ठीक है छोड़। ऐसा मिलकर सॉल्यूशन चेक इंश्योर डिटेल्स सच एज कस्टमर पोस्ट डेटा डेटा में entered in the correct format. A review should be input sales order into the website with various incorrect details to check the system would reject the order. ठीक है। ऐसे handle validation checks to ensure that the details postcard and the amendment details are in the correct format. Try inputting the permission of the entity. Try inputting incorrect details into the system, and the system should reject this order. Input a sales order into the website with the various incorrect details to check that system won't reject the order. The order सही है। Correctly and fully payment is made in advance to the Reduces website the with the risk same of as orders being. This reduces the risk of orders being processed incorrectly. This reduces the risk of orders being processed incorrectly. The words are not being delivered to the correct position. Ensure accuracy of sale. सही है, मुझे तो सही लग रहा है। अपने देखा नहीं नहीं था। सही है बट मैं नहीं नहीं ये लैंग्वेज में लिखा है कि सब सही है समझ में आ रहा है लेकिन मेरे को थोड़ा डीप जाऊँ ना इसमें। अगर मैं नाम किसी और का दूंगा कार्ड की पेमेंट किसी और से करूंगा एड्रेस किसी और का करूंगा तो सिस्टम कैसे इसको वेरीफाई करेगा कि उन्होंने मेरे सिस्टम डिटेल्स का। वैसे बनाया ना, उन्होंने सिस्टम वैसे बनाया है कि वो वेरीफाई कर देना चाहिए ऐसा। आई थिंक सो एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिकॉर्ड पे करेंगे वो। वही वही वही। तो ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक क्रेडिट एंड क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट एंड क्रेडिट रिटेल कस्टमर। एक मिनट से राइट साइड ही बढ़ते हैं इंस्पेक्ट सैंपल ऑफ कस्टमर फाइल्स टू इंश्योर द क्रेडिट check has been obtained and appropriate credit limit should be set by the sales manager. बराबर। कस्टमर रिटेल अंडर को क्रेडिट चेक्स prior to accept and the credit limits are set accordingly by the sales manager. वो अपन ने मार्क किया था। This reduces the risk of irrecoverable debts which can cause loss to the company and resulting in overstatement of receivables not written off. Inspect the sample of customer files to ensure that credit checks have been okay. Sample of customer files to ensure credit checks have been obtained and appropriate credit limit has been set by the sales manager. This should be evident. This should be reviewed by way of signature of the sales manager. responsible officer sales manager. Invoice raised from GDN. ये मेरे को पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। Sales invoices are raised by account department using GDNs. Monthly sales customer statements are sent to the retail. Monthly customer statements are sent to the retail customers by credit control team, and the credit control team follow up on overdue debts.
sales invoices are raised from GDN. This ensures that the invoice relates to actual quantity and type of goods dispatched rather than the orders, which may be different. For a sample of invoices, agree the quantity and type of goods to the GDN. Inspect the GDN for evidence to be matched to invoices to ensure the control has been performed. So yeah. तो म्यूट पे है, म्यूट पे है। अरे म्यूट पे है। तो द कंट्रोल है। अच्छा कॉल आया था। हाँ यार कॉल आ रहा है बाद में, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया। साहिल का कॉल होगा। आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे है। अरे म्यूट पे। म्यूट 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 म्यूट। तू म्यूट पे है, तू म्यूट पे है। अच्छा कॉल आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो तो काट भी नहीं सकता ना मैं। अच्छा तू काट नहीं रहा है। अबे यार। काट नहीं सकता मैं, तुमको वो बोल रहा हूँ। ठीक है जाए दे, छोड़ अभी। आगे चलेगा बढ़ते। चलेगा ठीक है। Invoices आगे बढ़। raised from GDN. For a sample of invoices, agree the quantity and type of goods to GDN. Agree the quantity and type of goods to GDN. Inspect the GDN for evidence to be matched. Inspect the note for evidence to be matched to the invoices to ensure control has been performed. ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। तो वही हो जाएगा ना एग्जिस्टिंग वाला कि चेक योर जीडीएन कंपेयर टू द इनवॉइस Check the sales invoices परफॉर्मेंस। to GDNs, बराबर, बस वही है। उनका क्वांटिटी और टाइप ऑफ गुड्स चेक करना सा वो बोल रहे हैं, बस उतना ही है। नहीं करेगा तो कुछ चलेगा। Reduce the risk of customers paying incorrectly for goods not received, which will result in misstatement of error. मैं ना इधर एक ठीक है। सेकेंड ना इसको, हाँ, मैं जरा खाली इसको यहाँ से पूरा रब कर देता हूँ ताकि मैं रात को एक बार ये सम फिर से कर पाऊँ। मेरे को पीयर इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो एक काम देखो, क्लियर नहीं करता क्या ऐसे, क्लियर का ऑप्शन रहेगा ना। नहीं मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना, मेरे दूसरे इससे कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम जूम। जूम का पेन नहीं है। हाँ, सस्ता पहले दूंगा वैसे भी। रेगुलर हाँ भाई, रेगुलर कस्टमर स्टेटमेंट्स आर and follow up of overdue debts. Customer statements are sent on a regular basis, which reminds the customer of the invoices they need to pay. Also, Means they also can these check if there are any invoice. alongside the follow-up of Alongside overdue the debts, the risk of irrecoverable debts is reduced, which would cause loss to the company and would result in overstatement of receivables if not written off. For sample of customers, inspect the copies of monthly statements to confirm that they were actually sent out and review the evidence of follow-up of overdue debts, such as notes of phone calls or emails sent to the customers. इस ऐसे तूने बोला था कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से कॉल नहीं कर सकते। हाँ, पहले बोला था। Statements are sent to कर the सकते हैं। monthly customer statements are sent to the retail customers by credit control team. Review a sample of monthly customer statements being sent to the retail customers by credit control team, and also review a sample of funds that overdue debts on overdue debts have been conducted. ठीक है ठीक है। Inventory चलेगा। levels not Payment checked. Inventory levels are checked on a regular basis prior to the purchase
of raw materials. एक बार मैंने ये अपन इसमें देख लेते हैं पैराग्राफ में. Stock level on a weekly basis and place a purchase requisition with the centralized procurement department. This ensures our necessary goods and services are procured, reducing the risk of loss of company. This reduces the risk of inappropriate levels of stock being maintained, which could result in obsolescence and overstatement of inventory if not valued appropriately at the lower of the cost and net realizable value. Observe the weekly stock check process being performed by the factory supervisor in a number of factory locations. Inspect a sample of requisition for evidence of inventory levels being checked first, such as signature. On a weekly supervisor checking the stock level on a weekly basis and inspect if the purchase requisition department and the position which has been sent government department. For the procurement department. Evidence of stock level being checked first, such as signature. Should be evident on your signature. क्या कर रहा है? अच्छा एक मिनट वहां पे जाओ, ये यहाँ पे जाओ, आ गया. Alt tab bro, alt tab. हाँ क्या बोल रहा था? तू कुछ मार्क कर रहा था ना, कर ले चाहिए तो. नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया. ठीक है. आजा इन्वेंटरी नेक्स्ट लेवल्स पॉइंट है. चेक तो बराबर था, बस मैंने उसके दो अलग अलग Requisition authorized. Requisition are authorized by the factory manager before being sent to the procurement department to ensure only necessary goods and services are procured and reducing the risk of loss of the company. This reduces the risk of inappropriate level of the stock being maintained, which could result in obsolescence and overstated of the inventory, if not valued appropriately at the lower of the cost and net realizable value. ठीक है. Inspect the sample requisition for the evidence of authorizing such a signature. ये कहाँ पे लोगों ने बोला था क्या ऑथराइजेशन? हाँ वो बोला था मैंने ना. एक्चुअली इस पैराग्राफ में ना 3 अलग अलग पॉइंट्स बनाए थे, उसके खाली 2 ही अलग पॉइंट्स फैक्ट्री में बिफोर बीइंग सेंट टू ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट. तो वही है कि परचेज रिक्विजिशन शुड बी ऑथराइज्ड विद द फैक्ट्री मैनेजर, रिव्यू इफ द ऑथराइज्ड बाय द फैक्ट्री मैनेजर, रिव्यू इफ द purchase requisitions have been authorized by the factory managers by way of signature. मीटिंग बंद हो रही है. मैं नई मीटिंग का लिंक मैंने तेरे को भेजा हुआ है. कितने मिनट का? कितने मिनट में? less than 1 minute. ठीक है मैं लीव कर रहा हूँ.